हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो ये जो एग्जाम है आपका हुआ था 28/1/2022 में। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आए थे, 2 घंटे का टाइम था इसमें। तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम, क्या क्या आपके आंसर रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑप्शन है आपके लीवर, ब्रेन, किडनी, स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किन। Skin is the largest organ of the body by the surface area and weight, and it protect the body, regulate temperature, and the help in the sensation. And liver is the largest internal organ, but not the largest overall. Okay, next question. Question number third. The example of ECF is option A, CSF, blood, intestinal fluid, and option D, all of these. Correct answer is option D, all of these. Next question. Question number 4. The correct order of layer of epidermis from outer to inner side is option A, corneum, lucidum, granulosa, and correct answer is option A, corneum, lucidum, granulosum, and germinative. Next question. Question number 5th. The cell from which human body develop is known as option A है ovary, ovum, zygote, sperm. Correct answer is option C, zygote. Zygote is formed when sperm fertilize the ovum, and it is the first cell of a new human being. All body cell develop from this one cell through repeated division. Next question. Question number 6. The epithelial tissue found lining the urinary bladder is option A, squamous, option B, columnar, option C, slated, and option D, translation. Correct answer is option D, translation. Translations epithelial फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है. Can be stretched and recoil. And bladder expands when full and the shrink when the empty. So bladder में यही epithelial पाया जाता है. Next question. Question number 7 है, the epithelial tissue found in uterine tube is options है squamous, columnar, slated, and translation. Correct answer is option C, slated. Next question. Question number 8 है, the endocrine gland which control the function of other endocrine gland is option है adrenal, pancreas, pituitary, and thyroid. ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन दैट कंट्रोल थायराइड, एड्रेनल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एंड एड्रेनल ग्लैंड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन बनाती है पर दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करती। एंड पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाती है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। एंड थायराइड मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है लेकिन दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. The bone is not forming the boundary of the cranial cavity. ऑप्शन है parietal, sphenoid, and mandibular and temporal. ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, mandibular. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 है, the substance involved in inflammatory reaction is ऑप्शन है रेनिन, हिस्टामिन, हेप्टिन, थायरोक्सिन. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिस्टामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The volume of the voice produced by a man depend upon option है length of the vocal cord, force with which the cord vibrate, option C shape of the mouth, option D tightness of the vocal cord. Correct answer is option B force with which the cord vibrate. मनुष्य की आवाज की जो वॉल्यूम है वो किस पर निर्भर करती है? फोर्स विद विच द वॉल्यूम कॉर्ड वाइब्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ वॉर्म डिस्चार्ज. ऑप्शन है 1 2 3 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 13. The patient presents symptoms at the time of acute respiratory failure. Option A, hypercapnia. Option B, hyperventilation. Option C, hypoxia. And option D, all of these. हाइपरकैस्मिया मीन्स खून में CO2 बढ़ जाता है. सी जो हाइपोक्सिया जो है उसमें शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा. ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 है लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इज. ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 48 टू 72 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 है द कंजेनिटल absence और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी और फाइस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड. ऑप्शन है इसमें फिस्टोला, आर्टेसिया एंड ऑप्शन सी है इसमें हर्निया एंड ऑप्शन डी स्टोनिस. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आर्टेसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 है द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम. ऑप्शन बी रेजिडल वॉल्यूम. ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी टिडल वॉल्यूम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 18. The following tissue is widely and evidently distributed in human body is. Option A muscular, option B lymph, option C connective tissue and option D cartilaginous. Correct answer is option C connective tissue. Connective tissue is found everywhere: bone, blood, fat, ligament and cartilage, and it connect and support and bind body structure. And muscular tissue is not a widely spread, and lymph is a fluid, not a tissue type. And cartilage is a connective tissue, but limited only to joint, ear and. Question number 19. The eating behavior in human being is controlled by option A pancreas, option B hypothalamus, option C thyroid, option D pineal gland. Correct answer is option B hypothalamus. It control appetite and eating behavior. Pancreas control insulin and thyroid control metabolism and pineal gland regulates sleep. Next question. Question number 20. The synthesis of glucose from fat is called. Option A glycolysis, option B glycogenesis, option C carb cycle and option D saponification. Correct answer is option B glycogenesis. Glycogenesis formation of glucose from non-carbohydrate sources, and glycolysis is a breakdown of glucose. Carb cycle energy formation cycle. Saponification soap formation. Next question. Question number 21. Glenohumeral joint is also called. Option A hip joint, knee joint, shoulder joint and elbow joint. Correct answer is option C shoulder joint. Next question. Which blood group can be administered to a patient in emergency when his blood group is not known? Option A O negative, O positive, AB negative and AB positive. Correct answer is option A O negative. O negative is a universal donor. It has no AB antigen and no RH antigen, so it is safe for all. Next question. The major constituent of the bone is option A calcium sulfate, option B sodium chloride, option C magnesium sulfate and option D calcium phosphate. Correct answer is option D calcium phosphate. Bone contains 70% inorganic part, mostly hydroxypeptide, calcium phosphate. Next question. Question number 24. The protein factory in human body cell is option nucleus, cytoplasm, Golgi apparatus and ribosomes. Correct answer is option D ribosomes. Next question. Consists of option A T cell, C cell, neuronal,
projection, and option D, beta cell. Correct answer is option C, neuronal projection. Posterior pituitary is made of nerve fiber coming from the hypothalamus, so it contains neural projection, not hormone producing cell. Next question. Question number 27. Which part of brain control the body temperature? Correct answer is option C, hypothalamus. Next question. Question number 28. Question number 28. The Adam apple is formed by. Correct answer is option C, thyroid cartilage. Adam apple is outward projection of the thyroid cartilage in front of neck. Next question. Depolarization in nerve action potential is due to option A, opening of potassium channel, opening of sodium channel, opening of the calcium channel, and closing of sodium channel. Correct answer is option B, opening of a sodium channel. Question number 30. The recommended flow rate of oxygen via nasal cannula is. Correct answer is option A, 1 to 4 liter by minute. Next question. The size of intravenous cannula used for neonate is option A, 24 goes, 22 goes, and 20 and 18. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 24. इसका कलर कैसा होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं. क्वेश्चन नंबर 33 है. द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय. ऑप्शन है स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोड्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 38. Treatment of severe dehydration is start DNS immediately. Option B, start colors immediately. Option C, start RL immediately. And option D, combination of 5% dextrose with RL. Correct answer is option C, start RL immediately. Next question. Common complication after perforations of the appendix. Option A, hemorrhage, peritonitis, PID, and the intestinal obstruction. Correct answer is option B. Next question.
span of human platelet is option A 10 to 12 minutes, 10 to 12 hours, 10 to 12 days, and 10 to 12 months. Correct answer is option C 10 to 12 days. Next question. The lifespan of human RBC is option A 120 minutes, 120 hours, 120 days, and 120 months. Correct answer is option C 120 days. Next question. The human blood cell are evaluated option A RBC, WBC, and platelet, and both RBC and platelet. Correct answer is option A RBC. Question number 50. A patient with liver fail having edema is most likely to receive option A diuretics, laxative, antidiuretics, and beta blocker. Correct answer is option A diuretics. Next question. The drug of choice of methicillin resistant Staphylococcus aureus. Option A clindamycin, vancomycin, erythromycin, and gentamicin. Correct answer is option B vancomycin. Next question. Question number 52. Which of the following antitubercular medication has the side effect of peripheral neurosis? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा आइसोनियाजिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient came to ED unconscious with pinpoint pupil lacrimation and history of the substance abuse. Which drug to be administered to him? Option A naloxone, lorapism, flumazenol, and the naloxone. Correct answer is option A naloxone. Next question. Question number 54. A patient with DVT is advised low molecular heparin at which site the nurse should administer this. Option A oral, IM, IV, and subcutaneous. Correct answer is option D subcutaneous. Next question. Which drug may causes gray baby syndrome? Option A chloramphenicol, gentamicin, penicillin, and tetracycline. Correct answer is option A chloramphenicol. Next question. Which of the following is not a side effect of the salbutamol? Option A muscle tremor, sedations, palpitations, and the nervousness. Correct answer is option B. Next question. Question number 57 है which is the drug of choice for severe and complicated malaria? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 58 है एंटीडोट फॉर हेपरिन इज ऑप्शन ए प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी अमाइनो कार्बोइक एसिड, ऑप्शन डी अमाइनोडायरोन. ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें प्रोटामाइन सल्फेट. The constant presence of a disease or infection within a given geographical area is called. इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61 है कॉप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑप्शन है चिकन पॉक्स, प्रोटोसिस, कोलेरा एंड मीजल्स. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें मीजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not constituent of vital statistics? Option A birth rate, morbidity or mortality rate, educational rate, and option D है life expectancy. तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा एजुकेशनल रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीडी फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ऑप्शन ए एससी, ऑप्शन बी आईडी, ऑप्शन सी आईएम, एंड ऑप्शन डी आईवी. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें इंट्राडर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑप्शन ए प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी टर्सरी हेल्थ केयर, एंड ऑप्शन डी प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर. तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें सेकेंडरी हेल्थ केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65 है हाउस फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ
ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी कोलेरा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the Mental Health Bill became Mental Health Act? Option A 1912, option B 1985, option C 1987, option D 1990। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, a freshly prepared ORS solution should be used within option A 24 hours, option B 48 hours, option C 12 hours, and option D 6 hours. Correct answer is option A. A freshly prepared ORS solution should be used within 24 hours. Next question. Next question. Uterus is palpable at the level of symphysis at option A 8th week, 10th week, 12th week, and 14th week. Correct answer is option C 12th week. Next question. Normal duration for involution of uterus is option A 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, and 8 weeks. Correct answer is option C 6 week. Next question. Rozgar Bazaar 2.0 portal, which was seen in the news recently, is associated with which state? Option A New Delhi, option B Bihar, option C Uttar Pradesh, option D Assam. Correct answer is option A. Next question. Which city has become the gas city in the world of implement 100% paperless strategy in its government functioning? In which of the following year Lucknow Pact was signed by Congress and Muslim League? Option A 1950, 1916, 1917, 1980. Correct answer is option B. Next question. Which of the following is our constitutional bodies? GST Council, Niti Aayog, Election Commissioner, and Union Public Service Commission. Correct answer is option B. 1, 3, and 4 only. Next question. Who was the Padma Vibhushan 2020 award under the Public Affairs category? Correct answer is option A. Next question. Which of the following separate Lesser Himalaya from Sivalik? Correct answer is option D. Main boundary fault. Next question. Choose the plural of the given word bacillus. Option A bacilluses, option B bacillosis, option C bacilli, and option D bacillusis. Correct answer is option C. Next question. Correct answer is option B. He told me that I had been reading the novel. Next question. Find out the error part of the following sentence. The real important thing of our life is our childhood, which discriminates us from animal. Correct answer is option A. The real important thing. Next question. Find out the error part in the following sentences. I warned him for the danger he was going to face during the hiking. Option A, I warned him. Option B, for the danger. Option C, he was going. Option D, to face during the hiking. Correct answer is option B, for the danger. Next question. What will be the 21st term in the series?
3, 9, 15, and next term is 123. Option C is correct. Next question. Complete the following series. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का जैसे रिलेशन है आयरन से, क्लोरोफाइल का रिलेशन किससे होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, EWS quota introduced by Government of India was implemented by which constitutional amendment? Correct answer is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करके आंसर देना है तो आप इसको रीड कर लेना। ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 87 है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स डी कैन मैरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जे ओनली। नेक्स्ट है, if the generation of F and K parents are their sibling contains more female than male, then which of the following must be true? Correct answer is option C. There are more female than males in the F and K generation. Next है, who is F? Correct answer is option A. Next question, Kotla Lake is situated in which of the following district of Haryana? Correct answer is option A, Mewat. Next है, arrange the following district in ascending order in term of population density as per the census of the India 2011. Correct answer is option A, 3142. Faridabad, Hisar, Gurugram and Bhiwani. Next question, B is the husband of P, Q is the only grandson of E, and who is the wife of D and mother-in-law of P? How is B related to D? Correct answer is option B, son. Next question, first is R is between G and P, M is between P and S. What is the position of Q? The correct answer is option C, can't be determined. Next question, Vikas is twice as good a workman as Suresh and is therefore able to finish a piece of work in 30 days less than Suresh. In how many days they can complete the whole work working together? Correct answer is option C, 20 days. Next question, when twice the original number is divided by the same divisor, the remainder is 11. And what is the value of the divisor? Correct answer is option C, 37. Next question, a bus can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 km away from A at the same time. On the way, however, the bus lost about 12.5 minutes while stopping at the bus stop. The speed of car is, correct answer is option A, 120 km per hour. Next question, the simple interest on a certain sums of 8 months at 4% per annum is rupees 129, less than the simple interest on the same sum of for the 50 months at 5% per annum. The sum is, correct answer is option B. Next question, the spherical metal ball of radius 6 cm is melted at the small metal ball of radius 3 mm are made. The total number of possible small metal ball is, correct answer is option B. मैथ के सॉल्यूशन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे, जब अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये आपका स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।